हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला। आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करबा रिलेटेड टू स्कीम्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। Whenever we talk about government scheme and government policies, in general aspirants find it very much difficult to go through all these schemes in of the last financial year or of the last budget, then to memorize all those things and produce in the exam paper. जदि आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन को हमें क्लासिफाई करबा ए जीएस 1 रु आसुची ना 2 रु 3 रु 4 रु ना ये केवल ओसीएस एग्जामिनेशन को कन्फाइन करूची और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कन्फाइन करूची। आज सेशन को क्लासिफाई करबा गोटे डिफिकल्ट टास्क। काहे कि डिफिकल्ट टास्क ना एतिरे ओएस प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसीबो, मेंस रे क्वेश्चन आसीबो, ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी ज्योग्राफी रे क्वेश्चन आसीबो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मानकर मध्ये क्वेश्चन आसीबो। सो गवर्नमेंट स्कीम बा गवर्नमेंट पॉलिसी आम पे गोटे बहुत इंपोर्टेंट जोन बा इंपोर्टेंट एरिया जहाँ को हमें मिस न करवा दरकार। इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी रिलीजियसली वेरी जुडिशियसली then you should at least start with some of the important government schemes, recently launched scheme हो बा recently renewed scheme हो, जदि कौन सी पूर्व स्कीम रिन्यू होइची बा करंट टाइम पीरियड रे नेक्स्ट 5 ईयर पई 10 ईयर पई कौन सी एक्जिस्टिंग स्कीम को पुनी एक्सटेंड करा जायछि। ये परिप्रेक्षी रे हम पई प्रत्येक स्कीम को मन रखिबा बुझिबा एवं एग्जाम रे प्रोड्यूस करे इंपोर्टेंट हेता। तो आज हम अनेक गुडे इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर डिस्कशन करिवा। सो स्कीम को आस्तिबा पूर्वरु जस्ट स्मॉल डिस्कशन अबाउट व्हाई दिस स्कीम्स। ये स्कीम रो बैकग्राउंड कोन हमें समस्त जानि छै कि वी हैव अ वेलफेयर स्टेट। कोन कहलु वी हैव वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट रो अर्थ कोन? वेलफेयर स्टेट रो अर्थ होची द गवर्नमेंट यूज डज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोन कहलु गवर्नमेंट एठी कोन करूची ना गवर्नमेंट एठी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करूची। एटा कोड पेंशन हेची। This mentioned in the part 4 of the Constitution of India. कोडी part 4 रे जहा को हमें डीपीएसपी बोली कहउदी, जहा को हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोली कहउदी। So here the states are directed to formulate policies. The states are directed to formulate different type of schemes. बा पॉलिसी कहले बा स्कीम कहले हम एटी कोन बुझे डीपीएसपी को एनफोर्स करिया पई डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम फॉर्मेशन होता है। वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट रो फंक्शन। गवर्नमेंट अंडर different ministries are there, different departments are there. So as per the requirement अनुसार एठी गवर्नमेंट बा different ministry बा different department they come up with schemes. ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कोन? ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव होची वेलफेयर स्टेट। कोन कहली स्कीम रो ऑब्जेक्टिव? ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव होची वेलफेयर स्टेट बा जहा हम कहू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इला प्रथम कथा या पय स्कीम है। सेकंड जदि कोनो से इंटरनेशनल कन्वेंशन अछि एवं से इंटरनेशनल कन्वेंशन रे इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दैट कन्वेंशन एवं ताकू एनफोर्स करिया पय इंडिया रे मध्ये हमको डिफरेंट टाइप ऑफ आइदर लॉ बा एक्ट बा हम जाउ कोठी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम हम काढिया पय। मने कर एग्जांपल कहबी प्रथम कांसेप्ट समस्त बुझी पारथिबे कोन से असुविधा नै वेलफेयर स्टेट रे और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे बा डीपीएसपी। सेकंड पॉइंट को कहूची इंटरनेशनल कन्वेंशन। लेट्स टॉक अबाउट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे हेल्थ इज अ फैक्टर। हेल्थ गोटे पॉइंट अछि 17टा गोल अछि समस्त जानिथिबे 169 टारगेट्स आर देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ और लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। हेल्थ को प्रमोट करिया पई बा हेल्थ को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करिया पई हम पाखरे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स अछि लाइक आयुष्मान भारत स्कीम। सो आयुष्मान भारत स्कीम रे डायरेक्टली एटी लेखा होनी। आयुष्मान भारत स्कीम रे एटी डायरेक्टली डिस्कशन होनी बा डायरेक्टली लेखा होनी कि दिस इज टू एनफोर्स द एसटीजी गोल नंबर दिस एंड दिस बा सर्व शिक्षा अभियान लिखा जाउनी टू एनफोर्स एसटीजी गोल नंबर दिस एंड दिस बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as well as the international conventions they have a very common point. Let's talk about health, let's talk about education. ये सब गुडा का कॉमन पॉइंट बा क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन जहां नो कुछ कमेंट ये सब कॉमन पॉइंट। इंटरनेशनल कन्वेंशन रो ऑब्जेक्टिव मध्ये सेम एवं हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो ऑब्जेक्टिव मध्ये एटी सेम। सो एही कारण मानक पई बा स्पेसिफिकली डीपीएसपी को एनफोर्स करिया पई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स। देखो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स। सो आसीबा हमें डिस्कशन को तले हमें फर्स्ट स्कीम को आसीबा मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड समस्त जानिछे कि इन द इकोनॉमी वी हैव थ्री इंपोर्टेंट सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर
secondary sector and tertiary sector. कौन कहली? Primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is all about your agriculture, secondary sector is about manufacturing, and tertiary sector it is all about service sector. Apart from that, economic session ने मोदे discussion करचे about quaternary and quinary sector. ता ऊपर समझते पढ़िथिबे. So एठी ये infrastructure fund या नाम भी आमे जानि पड़चे. एठी दीटा पॉइंट हमर इंपोर्टेंट कोन ना गोटे हला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गोटे फंड. ता माने फंड जेहेतु अच्छे हम बुझछे ई किछि पई गोटे फाइनेंस दोछि और फंडिंग प्रोवाइड करछि. प्रथम कथा. द्वितीय कथा होछि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ व्हाई इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्टेंट फॉर अस इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर रे जदि हम देखा टोटल आउटपुट बा टोटल प्रोडक्शन केते होछि, से प्रोडक्शन इनपुट टू आउटपुट रेशियो केते हम इनपुट देइछे, केते टंका खर्च करिछे और आउटपुट केते पाइले बा इफेक्टिव एग्रीकल्चरल आउटपुट केते अछि हम पाखरे ताकू बाहर करिया पई बा ताकू डिफाइन करिया पई इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट. मन कर मु कहबी कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्शन हे गला, प्रोडक्शन हेला परे हमें ताकू स्टोर तो करबा दरकार, अदरवाइज फूड सिक्योरिटी हम अचीव करि परिबा. हम व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, से समय हमको स्टोरेज करिवार आवश्यकता रहिछि. सो वी नीड कोल्ड स्टोर व्हिच इज अ इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट माने अमल हेला परे स्टोरेज को बढ़ेबा पई बा क्षेत्र वैल्यू एडिशन करिया पई, वैल्यू एडिशन करिया पई हमको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार. सो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को कैटर करिया पई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड रे इन्वेस्टमेंट करिया पई एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होछि. ये गोटे सेंट्रल सेक्टर रा स्कीम एवं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किया को इंप्लीमेंट के करिवो ना नाबार्ड को इंप्लीमेंट करिवो. के करिवो कहली? नाबार्ड इंप्लीमेंट करिवो. एठी आ गोटे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. नाबार्ड को फाइनेंशियल ईयर रे आसीला एवं केबे आसी? मोस्टली क्वेश्चन आसे नाबार्ड को फाइनेंशियल ईयर रे आसीला. एटा को समस्त आंसर देबे कमेंट हुए. नाउ कम टू हु आर द बेनिफिशियरीज. ये जो फंड ऊपर को डिस्कशन कली, ये फंड रो बा ये स्कीम रो बेनिफिशियरी को माने प्रथमतः प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बा एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर जो माने बा नुवा स्टार्टअप एग्रो स्टार्टअप जो माने एग्रीकल्चर फील्ड रे स्टार्टअप आरंभ करूछन. सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्डेबल करिया पई, फाइनेंशियली वायबल करिया पई समस्त जेंति ताको यूज करि परिबे, बहुत अधिक टंका जेंति न पडु समान को कोल्ड स्टोरेज करिया. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ भारत कैंपेन. एटी मन रखिबे भारत रो फुल फॉर्म कोन? भारत कैंपेन, बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज अ कैंपेन. ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव होची मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करिया को मानको ना टू द पीपल टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू मोबिलाइज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. जेते गुडे एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट अछि से रिलेटेड बैंक माने केमति इजीली लोन डिस्पर्स करन बा बैंक मानकर गोटे कॉम्पिटिटिवनेस, बैंक मानक भीतर गोटे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करबा होची भारत कैंपेन रो बेसिक ऑब्जेक्टिव. So this is a part of this fund is a part of आत्मनिर्भर भारत अभियान बा जो हमको सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन. सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन ये केबे आसला? इट वाज अनाउंस्ड बाय द सेंटर इन May 2020. केबे? ना May 2020 रे आस. सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम जो हम कवर करले. बर्तमान सेकंड स्कीम को आसीबा पीएम किसान. मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम पीएम किसान और सीएम किसान. मेनी टाइम्स इट इज फाउंड इन द न्यूज रे हमको एटा बहुत समय देखा पई मिलुची. तो यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन. यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन, बेसिक पर्पस कौन? टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज. उतरे नाइन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स एंड आल्सो डोमेस्टिक नीड्स. डोमेस्टिक नीड एवं इनपुट पाई ये फाइनेंशियल नीड को कैटर करूची. को माने आर बेनिफिशियरी ना ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स. जेते जण फार्मर अछन सब टाइप रो लैंड होल्डिंग फार्मर होतन आर बेनिफिशियरी. प्लस एक्सक्लूजन कोन बेनिफिट कोन एटी मिलुची ना 6000 पर ईयर कैश. 6000 पर ईयर प्रत्येक 4 मास रे थरे 2000 टंका मिलिबो. प्रत्येक 4 मास रे थरे 2000 टंका मिलिबो. सो टोटल एनुअली 6000 टंका एटी मिलुची. सो गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्कीम एतने 100% फंडिंग आसे कोठु ना सेंट्रल गवर्नमेंट. ये केबे टू ऑपरेशनल ना 2018 नु ऑपरेशनल. ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कहली कि सपोर्ट इनकम सपोर्ट दोउची 6000 पर ईयर. ऑगमेंट फार्मर्स इनकम, फार्मर को गोटे इनकम लेवल ले सपोर्ट दोउची. तो को माने को मिलिबो? फैमिली ऑफ द फार्मर इंक्लूडिंग द हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन.
तो ये जो फार्मर फैमिली आपको आइडेंटिफाई किए करिवो आपको आइडेंटिफाई करिवो स्टेट गवर्नमेंट बा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कि आइडेंटिफाई करिवो आपको आइडेंटिफाई करिवो स्टेट गवर्नमेंट बा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक अछि एति डायरेक्टली एटा बैंक अकाउंट को जीवो लाइक डीबीटी एथरे किछि एक्सक्लूजन कैटेगरी मध्ये अछि समस्त को इस स्कीम रो बेनिफिट मिल परिबो नाही किछि एक्सक्लूजन अछि ओ मान को एक्सक्लूजन अछि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ना ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जो माने फार्मर फैमिली जो मानकर जो माने बिलोंग करतनी फार्मर बा प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो माने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को थिले पूर्वरु बा वर्तमान अछन फार्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोकसभा तो याको देखि के जानि पड़ते को माने एथरे एक्सक्लूड हेबे याको डिस्कशन बेसी करिवार किछि आवश्यकता नाही जो माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे अछंती स्टेट गवर्नमेंट रे अछंती हला बा जो माने पेंशनर फैमिली जो मानकर मंथली पेंशन इज मोर देन 10,000 or more all persons who paid income tax in the last assessment year professionals like doctor engineer lawyer chartered accountant architect हला एमाने सब आसीबे एमाने इस स्कीम रो फायदा उठै परिबे नाही ये गला सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम बटन थर्ड स्कीम का आसीबे हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कोन कहली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम ही जणा पडुची क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम याको देइथिबो किए को मिनिस्ट्री रिस्पांसिबल नाम ही जानि पडुची अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फसल बीमा योजना इन्वॉल्वमेंट कहार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव कोन ना क्रॉप प्रोटेक्शन व्हाई क्रॉप प्रोटेक्शन एटा बुझिया पई हला ना ये स्कीम गुडा को याको हमें इकोनॉमिक्स पढेला बेले मध्ये पढाई छी जो एग्रीकल्चर हमें देखु छे एग्रीकल्चर इज इट इज अ प्रोसेस कोन कहली एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस कोन हो जे एटी प्रोसेस रे देखंतु बुझंतु एटी कोन करछे ना हमें किछि इनपुट नउचे एवं फाइनली हमको प्रोसेसिंग हेला परे बा हार्वेस्टिंग हेला परे हम एटी आउटपुट पाउ सो एग्रीकल्चर रे हमको रिफॉर्म प्रत्येक स्टेज रे दरकार है इनपुट रे हमको कोन दरकार ना इनपुट रे मोस्ट इंपोर्टेंट हो हम पई के ना सीड मंजी दुई रे कोन दरकार ना इरिगेशन दुई रे कोन कहली इरिगेशन तीन रे कोन कहली तीन होची फर्टिलाइजर चार रे मु लिखि दोची टेक्नोलॉजी चार रे टेक्नोलॉजी सीड्स रे हमें को टाइप ऑफ सीड को यूज करि परबो ना हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज करि परबो जो गुडा को अधिक प्रोडक्शन देबे आउ कोन यूज करि परबो ना जीएम क्रॉप्स या पर वर्तमान रिसर्च चली छी जीएम क्रॉप आको यूज करि परबो इरिगेशन रे हमें स्प्रिंकल इरिगेशन यूज करि परबो लबा ड्रिप इरिगेशन यूज करि परबो वाटर कंजर्वेशन बढ़िया पाई वाटर रिटेंशन बढ़िया पाई बा वाटर यूजफुलनेस को बढ़िया फर्टिलाइजर रे वी कैन गो फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बा जैविक कृषि जाको कहआ जाउछ टेक्नोलॉजी रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करि परबो लाइक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी रे हमें कोन यूज करि परबा मुको डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स ट्रैक्टर कल्टीवेटर हार्वेस्टर पावर टिलर ये सब यूज करि परबा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी रे कोन यूज करि परबा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वीडिसाइड्स ये सब केमिकल टेक्नोलॉजी अंडर आछ बायोटेक्नोलॉजी रे कोन यूज करि परबा ना हाई यील्ड वैरायटी सीड बा हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड यूज करि परबा फ्लड रेजिस्टेंट सीड यूज करि परबा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रे आईटी यूज करके हमें इंफॉर्मेशन पाउचे कोन पाउचे एटी ना इंफॉर्मेशन पाई परुचे हला दीज आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट वी कैन यूज इनपुट साइड रे एति की रिफॉर्म हमको दरकार इन द सेम वे आ एटी कोन दरकार त प्रोडक्शन होउची एई समय रे हमको दरकार एटी कोन दरकार प्रोडक्शन समय बा हार्वेस्ट समय रे एटी हमको दरकार इंश्योरेंस एटी कोन दरकार हमको ना इंश्योरेंस एटी इरिगेशन मध्ये दरकार पेस्ट मैनेजमेंट दरकार हला आउटपुट रे कोन दरकार ई गोटे थरे बुझंतु एग्रीकल्चर को पूरा गोटे स्लाइड रे एटी बुझौची या पर किछि भी स्कीम आसु बा रिफॉर्म आसु बा एग्रीकल्चर रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन आसु तो आंसर कर परिबे एटी देखंतु आउटपुट रे एटी हम कोन मिलुची आउटपुट मिलला पर हम कोन दरकार ना मोस्ट इंपोर्टेंट हैला स्टोरेज ताको स्टोर करबा दरकार प्लस क्रॉप लॉस हे गले एटी इंश्योरेंस मध्ये दरकार क्रॉप लॉस हेले बा मार्केट को एक्सेस दरकार एटी बिकिबो कोनल कोठी बिक्री कोठी करियो ये तीनटा हला इंपोर्टेंट आ गोटे पॉइंट एटी रहला क्रेडिट 5 नंबर पॉइंट इनपुट रेट लेखुची क्रेडिट बा लोन फैसिलिटी सो देखो जहां भी स्कीम आसीबो आइदर या पे आसीबो हमको भी सॉइल हेल्थ कार्ड गोटे स्कीम जोथरे सॉइल रो टोटल न्यूट्रिएंट वैल्यू गुडा से देखै होची फर्टिलाइजर से अनुसार यूज कर हला बा हम कहबी
फाइनेंस दउची टेक्नोलॉजी पई बा लॉन्ग टर्म लोन दउची पंप सेट किनिया पई सेटा एठी या अंडर आसी क्रेडिट दउची एग्रीकल्चरल क्रेडिट 5 नंबर अंडर आसी हला इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कथा एठी कहली पेस्ट मैनेजमेंट पई डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स आसुची आउटपुट स्टोरेज पई एठी डिस्कशन हम वर्तमान करूचे सेमती इंश्योरेंस कथा कहली एटा मार्केट एक्सेस रे मार्केट को केमती इजीली पठै परियो मार्केट रे केमती सेल करि परियो फार्मर ये हला एग्रीकल्चर ना टोटलिटी मु लाइफ साइकिल ऊपर डिस्कशन करी दिस इज द टोटल लाइफ साइकिल इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो वर्तमान फसल बीमा योजना पासवा स्पेसिफिकली यार ऑब्जेक्टिव हम जानि परछे कि इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्री सोइंग रो पोस्ट हार्वेस्ट त माने मंजी बुणीबा पूर्वरु आरंभ करी पोस्ट हार्वेस्ट पर्यंत अमल हबा पर पर्यंत ये क्रॉप को फाइनेंस को क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सो बेनिफिशियरी को माने ना ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर के भाग चाषी और टेनेंट फार्मर एमाने भी एठी इंक्लूड तो एठी कोन इंक्लूड ना एनुअल कमर्शियल एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ऑयल सीड फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स मिलेट पल्सेस सीरियल्स बुझी परछन समस्त सीरियल धान गहम मिलेट रे आसिला हमर हम कहबी जौ बाजरा मांडिया ये सब मिलेट्स आसे पल्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाली हरड़ डाली मुग डाली ये सब आसे दे आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये गोटे ऑप्शनल फॉर द फार्मर्स हु हैव नॉट अवेल्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो माने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं है सो ऑल द फार्मर्स हु हैव बोरोड इंस्टीट्यूशनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स दे आर कवर्ड अंडर द स्कीम मैंडेटरी जो माने एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटू क्वेश्चन आसी ए पॉइंट रो क्वेश्चन आसीबो एटी जो माने लोन नै चंती से माने मैंडेटरली कवर काहे की यदि लोन नहीं चंती यदि क्रॉप लॉस हे गला मे बी बिकॉज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी तल से लोन दा रिकवरी केमती हो इंश्योरेंस थिले तो रिकवर हो से कारण पई दैट इज मैंडेटरी फॉर दैट सो एटा बुझिले समस्त फसल बीमा योजना तो ये कौन करछि ना इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करछि फाइनेंशियल सपोर्ट दोछि टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेल्यूर ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप सो इनकम फार्मर रा इनकम को भी इंश्योर करूछि फार्मर जदि कोन से टाइप रो लोन नै छि ताले एचु से पाई कि तार इंश्योरेंस पाई से लोन टाको रिपेमेंट करि परिबो सो फार्मर सुसाइड मध्ये होबनी फार्मर ऊपर बर्डन मध्ये अधिक पड़िबनी सो फार्मर एटी इनोवेटिव एवं मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्ट करि परिबो क्रेडिट रहिला जेतु क्रेडिट रहिला बा इंश्योरेंस रहिला फार्मर एटी मॉडर्न प्रैक्टिस स्टार्ट करि परिबो प्रीमियम केते कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पाई 5% खरीफ क्रॉप पाई 2% 1.5% फॉर रबी क्रॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्लाइड वेरी वेरी इंपोर्टेंट एउठी क्वेश्चन आसी एउठी क्वेश्चन आसी लिखि दोती इंपोर्टेंट प्रीमियम केते टंका इंश्योरेंस रे किए दबो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानको पाई 90-10 90% दबो सेंट्रल गवर्नमेंट 10% दबो राज्य सरकार अलगा स्टेट मानको पाई 50-50 केंद्र सरकार आधा राज्य सरकार आ आधा चलो so yeah under the what is covered yeah under को factor coverage प्रथम वाला लोकल नेचुरल कैलामिटी लाइक लैंडस्लाइड बा हेलस्टॉर्म्स जदि लैंडस्लाइड हो जेमते रिसेंटली केरला रे हेतला कैलामिटीज लीडिंग टू लॉस ऑफ यील्ड लाइक फ्लड जदि हला ड्राई स्पेल्स ड्रॉट जदि हला पेस्ट इन्फेस्टेशन जदि क्रॉप लॉस कर देला जेमते मझिरे देखियो लोकस्ट अटैक कोटे हला जक हम कोन कहती पंगपाल locust attack hela so crop loss was there that is also covered under this scheme so losses occurred after investing crops after harvesting crops crop harvestment pore madhye ye include karibo jodi loss hochi because of war or same type of activity tahale madhye ye include karibo jodi ye enmity or riot pai danga pai jodi hochi tahale ye include karibo contamination jodi hochi nuclear risk pai contamination he gala malicious damage leading to yield carnage yield जदि कमी गला बा कंटामिनेशन हे गला एठी कहली एई सब कारण मान करबा एई ग्राउंड रे एठी हमको इंश्योरेंस मिल परिबो बुझी पारले समस्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंडर रे को कंडीशन एठी मिलुची या अंडर रे ना अनेक गुडे इनिशिएटिव अछि फर्स्ट इनिशिएटिव ना डिजी क्लेम सो ऑल द क्लेम्स दे आर वर्कड आउट थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का थ्रू रे नेशनल crop insurance portal through instead of by insurance company and it is paid to the farmer account weather information network data system portal एटी weather related information पाई yield estimation system याको yes tech कहा जाए most important ये क्वेश्चन करिवो yes tech manual कहा related ये क्वेश्चन करिवो सो ये ताला कोन yield estimation system door to door enrollment app
जार ना होची सहायक आप aims to enhance the accessibility of the scheme सहायक आप द्वारा यार accessibility को बढ़ाई दिया जाय पारि agricultural output को ये forecast करियो by using space और agro meteorology land based observation यार ना होची कोन फसल प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करियो फसल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दे दो क्रॉप यील्ड समस्त देखियो कि फसल प्रोजेक्ट माने नारु लागु क्रॉप यील्ड मार देके क्रॉप यील्ड आंसर कोन यार ना ये फोरकास्ट करछि एग्रीकल्चरल आउटपुट केते आउटपुट अछि को कहा को यूज करी कि ना एग्रो मेटेरियोलॉजी माने क्रॉप यील्ड इज द आंसर बट कोन यूज करी कि करू से दैट इज इंपोर्टेंट तो ये पॉइंट को देखिबे एग्रो मेटेरियोलॉजी अछि कि नहीं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट So these are the key initiatives. Key initiative रो जदि हम समराइज करबा को देखिबा this is all about using different type of technologies. को टेक्नोलॉजी को हमें यूटिलाइज कले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो संपूर्ण फायदा उठै परिबा एटी डिस्कशन हेछि नेक्स्ट देखिबा हमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना मोस्ट इंपोर्टेंट कोन कहले प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये कहा ऊपर फोकस करछि पर्टिकुलर स्कीम या हाँ इट इंपोर्टेंट को मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री किए ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एथिरे गोटे इंपोर्टेंट हिस्ट्री कहूची यार देखो गोटे स्कीम थिला स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान सॉरी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस याको कन्वर्ट कराला कोथरो ना ट्राइबल सब प्लान ये 1977-78 रे आस्ते जेतले प्लान और नॉन प्लान टा मिसी गला सेतले लाको को गला माने एटा को चेंज कर देबा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान केबे 2017 सो ये स्कीम अंडर 23 टा स्टेट इंक्लूड थिले केतना ए स्कीम अंडर 23 टा 23 स्टेट्स दे वर इंक्लूडेड तो यार ऑब्जेक्टिव कोन बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन हमें ऑलरेडी जानि सलेनी जेहेतु मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इट इन्वॉल्व तार विजन कोन समस्त इजीली बुझ पाथबे आरो विजन होची to transform the village को village जो village रे significant tribal population अच्छा से village को कोदरे ट्रांसफॉर्म करिवो ट्रांसफॉर्म करबा को आइडियल विलेज रे आदर्श ग्राम रे ट्रांसफर करिवो कोदरे ट्रांसफॉर्म करबा को आदर्श ग्राम रो अर्थ होची एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ायो कोन कहली एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ायो तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कोन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होची से गाँ रे रास्ता घाट पानी बिजुली अच्छी कि नहीं शिक्षा स्वास्थ्य सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी कि नहीं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता घाट पानी बिजुली व्यवस्था अच्छी कि नहीं सो ऑब्जेक्टिव कोन ना ऑब्जेक्टिव होची सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहार सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना जोटी जो विलेज रे ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक अच्छा तो से विलेज रो डेवलपमेंट प्लान करिवो से विलेज रो पोटेंशियल एस्पिरेशन कोन देखिवो कवरेज बढ़ेबो फैमिली बेनिफिट स्कीम सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट रा स्कीम अछि तार कवरेज बढ़े प्रोवाइड करियो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन कनेक्टिविटी बढ़ेबो रास्ता घाट पानी बिजुली इंक्लूडिंग योर लाइवलीहुड स्वास्थ्य जीविका मध्य ये प्रोवाइड करियो लाइक योर मनरेगा स्कीम रो रिचेबिलिटी को बढ़ेबो तो ये स्कीम कोन ना एटा गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कोन की को स्टेट कवरेज all the states and all the union territories having notified ST population so total जदि हमें देखिबा 36,428 villages having at least 50% of ST population and 500 ST persons they have been identified for the first phase केबे 2021-22 रु 2025-26 पर्यंत 2021-22 रु 25-26 पर्यंत यार प्रोविजन कोन केते टंका आसीबो ना 20 लाख 20.38 lakh per village that will be provided as gap filling fund पाई केते ना 20 लाख 38,000 टंका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किए ना एटा इंप्लीमेंट हो थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तो यार स्कोप कोन ना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को बढ़ाइयो को इंफ्रास्ट्रक्चर ना हेल्थ बढ़ाइयो न्यूट्रिशन मोबाइल कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये सब को इंक्रीज करबा हो चारा बेसिक ऑब्जेक्टिव सो कौन इंक्लूड करियो एटी को फैक्टर पे इंक्लूड करियो ना स्किल डेवलपमेंट प्लान बढ़ियो विलेज डेवलपमेंट प्लान विथ कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्राइबल रीजन गुडा कर फॉरेस्ट डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट काइना लाइवलीहुड को इंक्लूड करियो इंटीग्रेशन ऑफ वन धन प्रोग्राम कंजर्वेशन ऑफ पेरेनियल रिवर रिसोर्सेस एंड वाटर बॉडीज originating from the forest
फॉरेस्ट थ्रू जो पेरेनियल रिवर्स चिरस्कृत नदी आछन तार केमती ताको प्रिजर्व करा जाय परियो रिसोर्स गुडा को जहा अछि फॉरेस्ट रिसोर्स हेगला बा अदर रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स केमती कंजर्व करा जाय परियो याको टेक्निकल सपोर्ट मध्ये प्रोवाइड करा जाउची यार डाटाबेस सिस्टम एमआईएस थ्रू रे यार डाटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट होची ताले नोडल एजेंसी की कहली ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर चलो ये 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम गला तापर हम नेक्स्ट स्कीम को आसीबा ऑन योर सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 आपको मिशन पोषण 2.0 बोली कह जाउची यार नारू समस्त जानि परथिबे कि ये स्कीम रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन एवं ये स्कीम रो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किए ताको मध्ये समस्त जानि परथिबे सो अंगनवाड़ी आसिलानी पोषण ना आसिलानी कि हबो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सो ये ऑपरेशनल गाइडलाइन बाहर करछि फॉर मिशन पोषण 2.0 15th finance commission this scheme has been approved by the government of india for implementation during the 15th finance commission period ता केबे 2021 रु 25 बा 21 22 रु 25 26 तो ये नार ही लागू ये स्कीम कहा रिलेटेड हेतिवो ये स्कीम हेतिवो डेफिनेटली न्यूट्रिशन रिलेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट करिया पई ये स्कीम आस्ति सो दिस इज अ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम को मान को दबो न्यूट्रिशन सपोर्ट ना चिल्ड्रन एडोलेसेंट गर्ल प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर तो एमान को सब ये वेलनेस एवं इम्यूनिटी प्रोवाइड करियो सक्षम अंगनवाड़ी थ्रू सो जो शॉर्टकमिंग्स अछि ऑनगोइंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम रे बस मान को जो इंप्रूवमेंट रा आवश्यकता अछि दैट इंप्रूवमेंट विल बी डन थ्रू दिस पोषण 2.0 सो न्यूट्रिशन सपोर्ट पोषण थ्रू रे जको में सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोली कहूचे फॉर द चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर एडोलेसेंट गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट के 14 रु 18 वर्ष भीतर जो मान अछि 14 रु 18 वर्ष भीतर जो मान अछि कोडी इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कोडी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को हम इकोनॉमिक्स क्लास कवर करछि वन शॉट सीरीज अवेलेबल अछि प्लेलिस्ट रे समस्त देख परिबे ये YouTube चैनल रे अवेलेबल अछि प्लेलिस्ट जे कि समस्त देख परिबे सो अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन कहते ना 3 रु 6 ईयर पर्यंत अर्ली स्टिमुलेशन फॉर 0 to 3 years अंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पढाइबो ताको मॉडर्न करिवो अपग्रेड करिवो थ्रू पोषण अभियान ये उतार बेसिक ऑब्जेक्टिव सो यार आउ ऑब्जेक्टिव कोन ना माल न्यूट्रिशन को चैलेंज करिवा माल न्यूट्रिशन को कम करिवा न्यूट्रिशन अवेयरनेस बढ़ेवा ईटिंग हैबिट बढ़ेवा सस्टेनेबल हेल्थ एवं वेलबीइंग पाए सो ये बेसिकली को मान को ऊपर फोकस कला ना मैटरनल न्यूट्रिशन को यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स को बा वेलबीइंग को सो दिस इज द ये बेसिकली को मान को करछ फोकस ताले ना ये वल्नरेबल सेक्शन को करछ टू द वल्नरेबल सेक्शन लाइक दैट नेक्स्ट को जिबा हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो नुवा स्कीम नुया समस्त सुनिथिबे ये 2015 रे आस्थिला ये स्कीम सो ये करेंटली न्यूज रे काहे के अछि ना यार 9 ईयर सेलिब्रेशन हला रिसेंटली सो दैट इज व्हाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिस इज इन न्यूज सो ये कोन चाहू जे काहे के आस्थिला ना सेक्स रेशियो एट बर्थ बढ़िया पई सेक्स रेशियो माने 1000 मेल रे केतेटा फीमेल अछि सेटाला सेक्स रेशियो ताको इंक्रीज करिया पई प्रत्येक वर्ष बाय 2 पॉइंट इंक्रीज करियो बर्तन मु कहि केते पिला और केते अछि सो इंप्रूवमेंट कोथरे ना परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी माने मेडिकल डिलीवरी हो पूर्व जोटा घरे कर दोतिले ऑन इंस्टीट्यूशनल वे सो ये रेट को इंक्रीज करू 95% और अबव फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन फॉर योर 1% इंक्रीज इन हबो 1% इंक्रीज इन एनरोलमेंट एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल ड्रॉप आउट रेट को कम करिवा प्लस मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट करिवा ये सब होची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रो बेसिक ऑब्जेक्टिव दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम सो ये स्कीम आस्तिला म ऑलरेडी कहली 22 जनवरी 2015 कोठी हितला ना पानीपत हरियाणा रे हितला 2011 सेंसस अनुसार यदि हम देखिबा चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्सटेंसिवली डिक्लाइन करछि 1000 बॉय रे एटा केते ना 918 so 13 out of 35 states and union territories they have low CSR than the national average ru 13 टा state और union territory रे कम अछि sex ratio child sex ratio so the government of india selected 100 districts on the basis of low child sex ratio
as per census 2011 so pilot basis रे गोटे स्टेट रू एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट नहीं की चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करिया पई देखा गला मोटी क्यूडालोर डिस्ट्रिक्ट रो कथा डिस्कशन करछि तमिलनाडु याकू इंप्लीमेंटेशन पई फर्स्ट डिस्कशन फर्स्ट निया गला काई की एटी चाइल्ड सेक्स रेशियो लोएस्ट पिला इन दिस स्टेट तो तमिलनाडु रो चाइल्ड सेक्स रेशियो केते ना 943 नेशनल एवरेज होची 918 बट तमिलनाडु होची 943 इन ऊपर 1000 एटी देखो 2001 रो सेंसस एटी नीचे एटी सेंसस 2011 रो डाटा नीचे इंडिया रे केते एटी थले ना 927 एटी ला 918 कमिला केते पॉइंट कमिला डिक्रीज ऑफ डिक्रीज केतेटा पॉइंट डिक्रीज हला एटी 729 पॉइंट 9 पॉइंट डिक्रीज तमिलनाडु 942 थिला 13 ताने गोटे पॉइंट इंक्रीज कुडालो रे 957 थिला देखो एटी 896 957 नु 896 61 पॉइंट डिक्रीज हे जेछि केते 61 पॉइंट डिक्रीज 61 पॉइंट डिक्रीज है ओके सो ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव ताल कोन जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन कम करियो बा जो बडा को इन्फेंटिसाइड होची फीमेल फर्टिसाइड होची फीमेल इन्फेंटिसाइड होची ताको रिड्यूस करियो गर्ल चाइल्ड रो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करियो ताको तार सर्वाइवल रेट को केमदी बढ़ाइबो से विषय डिस्कशन करछु एजुकेशन एवं एजुकेशन ने गर्ल चाइल्ड केमती पार्टिसिपेट करियो बा ड्रॉप आउट रेट कम होबो से कथा कहू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते यार चेयरपर्सन फॉर इंप्लीमेंटेशन इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मन रखियो तले स्कीम रा अचीवमेंट कोन 2015 रो हेला 2015 रे क्यूडालोर रे थिला 886 वर्तमान 895 2016 रे गोटे वर्ष ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज 1.5% 2015 रे 2016 को एटा 1% को डिक्रीज 1.5 टू 1% डिक्रीज सेकेंडरी स्कूल रे ड्रॉप आउट रेट 3.26 रिड्यूस हेची 1.5% देन सुकन्या समृद्धि योजना अंडर जदि हम देखिया approximately 60,000 children they have their account so infrastructural development like residential school hechi toilet water facility बढ़िची installation of different type of toilets एवडा toilet install hechi कोठी girls school मान करे for the girls students so this is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ this is for हमें कहि परिबा to increase the child sex ratio then the next one is mission shakti बहुत फेमस स्कीम आपको समस्त सुनिथिबा एटलीस्ट कोटना कोटी मिशन शक्ति ना देखिबे रास्ता घाट रे होर्डिंग रे देखिबे बा बाली यात्रा रे कोनोसी मेला रे देखिबे मिशन शक्ति ऊपर आर ऑब्जेक्टिव कोन शक्ति रो नाम हो जानि परछ मैं ये एम्पावरमेंट करूछ कोन करछि ना एम्पावरमेंट करूछ सो ये वुमेन सेफ्टी बढ़ौछि वुमेन सिक्योरिटी बढ़ौछि और एम्पावरमेंट बढ़ौछि सो ये गवर्नमेंट रो कमिटमेंट देखौछि वुमेन लेड डेवलपमेंट करिया वुमेन लेड डेवलपमेंट करिया पे देखौछि सो मिशन शक्ति अंडर दीटा सब स्कीम अछि कोन ना गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य के गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य संबल स्कीम फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स लाइक वन स्टॉप सेंटर वुमेन हेल्पलाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब गुडा को या अंडर आसे सो मिशन शक्ति रो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कहली कि जो माने वुमेन एवं गर्ल इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो माने वल्नरेबल ग्रुप जो माने सेमान पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछ सो या अंडर रे दीटा आसिला गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य गोटे पर गोटे हम डिस्कशन करिया एथिर कोन होछ ए मिशन शक्ति व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन शक्ति फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इमरजेंसी इमीडिएट सर्विस शॉर्ट टर्म केयर ये प्रोवाइड करियो शॉर्ट टर्म केयर प्रोवाइड करियो 24 आवर हेल्पलाइन नेशनल टोल फ्री नंबर रे करि परियो और कोन पई टेम्पररी शेल्टर पई लीगल एड पई साइको सोशल काउंसलिंग पई करि परियो देन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन पई करि परियो बा फिजिकल फाइनेंशियल सोशियोलॉजिकल स्टेटस जो माने कर डिग्रेड हेछि बा ताको अपलोड करिया पई रिफॉर्म करिया पई यूज करि परियो बिहेवियर चेंज communication for dignity and prevention of crime and violence against women against violence को reduce करिया उचार another objective so संबल scheme under रे किछटा important point ऊपर डिस्कशन करिवा कोन आसुछि ना इट इंक्लूड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जाको डिस्कशन कली बर्तमान वन स्टॉप सेंटर एंड नारी अदालत कोन कहली नारी अदालत और वन स्टॉप सेंटर
वन स्टॉप सेंटर रो ऑब्जेक्टिव कोन ना ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड साइको सोशल एवं लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करूछ जो माने दोज वुमेन हु आर अंडर स्ट्रेस दोज हु आर फेसिंग मेंटल हरासमेंट ये जो माने डिस्ट्रेस रो अछंती वन स्टॉप सेंटर को मानको पई ना से मानको पई नारी अदालत को मानको पई ना वुमेन मानको पई दिस इज लाइक अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सो जो गुडा को harassment related type of crime अछि सेति अछि नारी अदालत ताकू सॉल्व करिया वुमेन हेल्पलाइन 24 आवर रो वुमेन हेल्पलाइन प्रोवाइड करा जो जो माने इमरजेंसी सिचुएशन अछि देन सामर्थ्य सामर्थ्य कोन इंक्लूड करछ ना ये करछ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सखी निवास अंगनवाड़ी कम क्रेज पालना हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये सब हम गोटे पर गोटे डिस्कस करिया मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट सखी निवास इट इज अ सिक्योर प्लेस कोन पई फॉर द स्टे ऑफ वर्किंग वुमेन जो माने वर्किंग वुमेन से मानकर स्टे पई बा से माने रहया पई ये इंपोर्टेंट स्कीम अछि देन आउ कोन अछि ना जो वर्तमान गोटे एक्जिस्टिंग स्कीम अछि वर्किंग वुमेन हॉस्टल कोन कहली जो माने वर्किंग लेडी से माने रहया पई हॉस्टल अछि सेफ्टी प्रोवाइड करिया पई से माने को हॉस्टल अछि ताकू रिनेम करा जाउछि कोथरे ना सखी निवास कोथरे रिनेम करा जाउछि ताकू ना सखी निवास बुझिला सो एठी को माने ना सिंगल वुमेन जो मानकर जो वुमेन मानकर फैमिली मेंबर तांको सहित रहू नांदी बा गर्ल्स दोज हु आर परसुइंग हायर एजुकेशन बा जो माने ट्रेनिंग नउछन से माने एठी रहि पारि 50 टा नुवा हॉस्टल क्रिएट हिची ऑपरेशनलाइज्ड हबो अंडर दिस मिशन ये मिशन अंडर 50 न्यू हॉस्टल्स टू बी ऑपरेशनलाइज्ड देन द नेक्स्ट इज पालना स्कीम मोस्ट इंपोर्टेंट आरी अंडर अछि एटा कोन ना ये क्रेज फैसिलिटी प्रोवाइड करछि को मानको पई ना वर्किंग वुमेन मानको पई वर्किंग वुमेन मानकर जो माने जदि छोटो बेबी अछि छोटो छुआ अछि चिल्ड्रन तब से कोड रखि जीवे काम तो एम्पावरमेंट ही पर वुमेन मानकर कोन पई ना ए ग्राउंड रे कि से मानको छोटो पिलार ध्यान रखिया पई ताके केयर न पई कि लोक ना सो पालना स्कीम कैटर करछि एटा पालना स्कीम द्वारा से माने क्रेच रे सेफ क्रेच रे से मानको पिला के छाडी काम को जाय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यार ऑब्जेक्टिव कोन जो माने प्रेगनेंसी एवं चाइल्ड बर्थ पई जो मानकर वेज लॉस होछि ये से मानको पई अछि So basically, it provides or contribute a better care for the pregnant woman or to the lactating mother, to the newborn, जो माने करो नवजात शिशु अछि से मानक मध्य सो एथिरे केवल वन चाइल्ड पूर्वरु कवर करा जाउतला वर्तमान सेकंड चाइल्ड को मध्य कवर करा जाउछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही आसी क्वेश्चन पूर्वरु वन चाइल्ड कवर होतला एबे सेकंड चाइल्ड को मध्य एटी इंक्लूड करा जाउछ देन नेशनल हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन district hub for empowerment of women 3-tier structure national level state level district level kon pai now for drilling down effective delivery implementation monitoring and feedback for all components of mission shakti convergence of all schemes sub scheme ro convergence initiatives for central or state government research publication related to gender budgeting gap funding for empowerment of women empowerment pai gap funding हैला देन नेक्स्ट टाइम देखियो शक्ति सदन ये सब गुडा कई गोटिया स्कीम अंडर आसछि सब गुडा के एट टाइम मन रखिबे ऑल आर रिलेटेड टू मेन एम्पावरमेंट इन डिफरेंट अप्रोच शक्ति सदन ऑब्जेक्टिव कोन ये प्रोवाइड करछि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एवं एम्पावरमेंट को मान को ना वुमेन दोज आर फेसिंग डेस्टिट्यूशन जो माने डेस्टिट्यूट वुमेन जहर कई नाहंती डेस्टिट्यूट समान को ये सपोर्ट प्रोवाइड करछि रिकवरी रिहैबिलिटेशन रिपैट्रिएशन reintegration to the society ये होती है बेसिक ऑब्जेक्टिव ये वाला मिशन शक्ति एवं क्षेत्र थिबा डिफरेंट कंपोनेंट मानक ऊपर एथरो हम कोन सिखिला दिस इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट कम टू नेक्स्ट वन स्किल इंडिया प्रोग्राम रिसेंटली स्किल इंडिया प्रोग्राम कंप्लीटेड 8 इयर्स पर्पस कोन ना ये स्किल बढ़ेबो स्किलिंग करिवो रीस्किलिंग करिवो अपस्किल करिवो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फाइनेंस के दो ना इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन कार मिनिस्ट्री कोन मिशन डायरेक्टरेट जो स्किल डेवलपमेंट बाय मिशन डायरेक्टरेट अछि सो दैट इज द मॉनिटरिंग एजेंसी सो इट हला स्किल इंडिया प्रोग्राम जहार ऑब्जेक्टिव कोन ना स्किल डेवलपमेंट बट प्रॉब्लम इज नॉट एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट जब देखिए डेली बेसिस पे देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ पब्लिकेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बहुत अछि बट as per the requirement employee पाखरे जते स्किल नाही so there is a gap of skill
स्किल रिलेटेड गैप एट रूट स्किल गैप को मिनिमाइज करिया पई बा अपस्किल करिया पई रिस्किल करिया पई ये प्रोग्राम आसुची कोन ना स्किल इंडिया प्रोग्राम कोन कहते ताको स्किल इंडिया प्रोग्राम सो ऑलरेडी कहली ऑब्जेक्टिव कोन ना गैप बिटवीन स्किल रिक्वायर्ड एंड द स्किल पोजेस्ड एम्प्लॉय मान का जहा स्किल दरकार एवं जहा स्किल अछि सेथरे गैप मिनिमाइज करिया पई पॉवर्टी रिडक्शन पई कॉम्पिटिटिवनेस बढ़िया पई स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया पई इंडियन मान को वर्ल्ड वाइड बा ह्यूमन रिसोर्स ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स रे परिणत करिया पई फॉरेन वर्क करिया पई एक्जिस्टेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़िया पई एक्चुअल कॉम्पिटेंसी बढ़िया पई जो मान को पाखरे स्किल नाही अपॉर्चुनिटी लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिया पई इनकम ऑगमेंट करिया पई ये सब उधर बेसिक ऑब्जेक्टिव दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करूची कोन कहली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करूची so the parliamentary standing committee on rural development and panchayat raj it released its report on pradhan mantri gramin sadak yojana purpose कोन ना रूरल कनेक्टिविटी बढ़ेबो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रूरल कनेक्टिविटी बढ़ेबो there is a fund sharing mechanism between the center and the state 90:10 for the 8 northeastern states 3 himalayan states and other state मानक पई 60:40 ratio important other state पई 60:40 northeastern state और himalayan state पई this is 90:10 ऑब्जेक्टिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करिवो ऑल वेदर रोड माने प्रत्येक समय रे ऑल वेदर रोड माने वर्ष सारा सब समय जेमचे रोड प्रोवाइड करि पाए तो तार बेसिक ऑब्जेक्टिव देन माहिर बा मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंपोर्टेंट वो मिनिस्ट्री लॉन्च करूची एटा जानिबा दरकार सो यार ऑब्जेक्टिव कोन पावर सेक्टर रे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करबा होची यार ऑब्जेक्टिव कोन कहली पावर सेक्टर रे इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी को यूज करबा होची यार ऑब्जेक्टिव हला ए गोटे पॉइंट मन रखबे को मिनिस्ट्री आनिची और तार ऑब्जेक्टिव कोन एति सो ऑब्जेक्टिव हला ऑलरेडी कहली कि ग्लोबल पावर सेक्टर रे इंडिया को मिसिया पई इंडिया को अपलिफ्ट करिया पई पावर सेक्टर कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिया पई पावर सेक्टर स्टेक होल्डर फॉर कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सिनर्जेटिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट आनिया पई सो साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिया पई इन पावर सेक्टर पावर सिस्टम डेवलप पावर सिस्टम करिवा as compared to other leading countries these are the basic objectives so को सेक्टर रे इट रिसर्च हबो ना लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कुकर ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर जियोथर्मल एनर्जी सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी then indigenous CRGO technology these are the field of research a field of research करा then now the next scheme को आसीबा survey of villages abadi and mapping with improvised technology in village areas आबादी जमी जो गुडा को ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज आनी सो ये इंटीग्रेटेड इनहाबिटेड प्रॉपर्टी जो गुडा को सार ओनरशिप सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करछि कोठी ना इन द रूरल एरिया रे सर ओनरशिप सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करछि गोटे पॉइंट ही मन रखियो आ कि दरकार नै एवं को मिनिस्ट्री आपको इंप्लीमेंट करछि एतिक मन रखियो नेक्स्ट वन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 so यार ऑब्जेक्टिव कोन 75 लाख एलपीजी कनेक्शन दबो नेक्स्ट 3 ईयर 2023-24 रु 25-26 पर्यंत सो डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन को मान को ना लो इनकम फैमिली मान को प्रोवाइड करा छै कि आनि छै मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंपोर्टेंट नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी कि आनि छै कर्मयोगी मिशन ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन now civil service examination जदि हम देखिबा it creates your bureaucrats for the future generation they are the permanent executives गवर्नमेंट रे तीनटा ब्रांच अछि समस्त जानिथिबे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव परमानेंट ले जो माने ब्यूरोक्रेट टेम्पररी ले जो माने पॉलिटिशियन मिनिस्टर हो जन सो सिविल सर्विस दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज दे आर द पॉलिसी मेकर्स दे आर द एग्जीक्यूटिव they are the executive branch of government so semanakara crucial responsibility को increase करिया semanakara crucial responsibility कोन crucial responsibility होची development of the country development of the nation तो semanakara capacity building करिवा होची आर basic objective as the name suggests यदि हम इंडिया एट 75 रिपोर्ट देखिबा नीति आयोग रो
ये हाईलाइट करूची नीड फॉर अ रिफॉर्म इन ट्रेनिंग रे रिफॉर्म पाई ये कहूची सो इट एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक रे ये समय जदि हम देखिबा कोन आवश्यक थिला हमर ना bureaucratic function that should be more and more dynamic because we don't know what is going to happen at what point of time. Future is quite uncertain. यही कारण जदि हम देखिए ब्यूरोक्रेटिक रेस्पॉन्स कोविड-19 पैंडेमिक समय रे हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स रा आवश्यक थिला एंड वी फेल्ट दैट as per the report, as per Niti Aayog report. So there is a national program for civil service capacity building. It has 6 pillars: policy framework, institutional framework, competency framework, digital learning framework, then your electronic human resource management and monitoring and evaluation framework. ये 6टा program बा 6टा pillar अच्छे अंडर. So it covers all the civil servants, contractual employee मान को मध्य ये include करूची across different ministries. All right. ठीक है. Next point को आसला उड़ान स्कीम. ये स्कीम रा ना समस्त सुनी थे. उड़ान उड़े देश की आम नागरिक कौन कहली उड़ान स्कीम उड़े देश की आम नागरिक. So CSG तांकर ऑडिट रिपोर्ट देले ऑन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान. सिद्धि पाई दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज. ए कारण एटा न्यूज रे अछि. सो उड़ान स्कीम आसिला पर कोन कोन चेंजेस हेछि उड़ान स्कीम परे हमको चेंजेस कोन देखिया पड़छि ना रही जानि पड़छ उड़ान फॉर द आम नागरिक मींस फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन ता माने ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यूज करियो बा सिविल एविएशन सर्विस को ये यूज करियो यदि हम देखिबा 2013 रे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज कंडक्टेड अ डिटेल स्टडी ऑन एयर ट्रांसपोर्ट. ये कहला कि कनेक्टिविटी इज लिमिटेड among the big cities of the country. So 2015-16 रे जदि हम देखिबा 65% connectivity was there and 61% air traffic that is focused between 6 important cities only. ता माने रेस्ट ऑफ द शहर को कोनोस प्रकार एयर कनेक्टिविटी नथिला. वर्तमान जदि हम देखिबा कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जायछि जोटा 6टा मेट्रो सिटी को केवल इंक्लूड करथला एबे रेस्ट ऑफ द सिटी मान को ये इंक्लूड कर दैछि जोटा मीडियम सिटी बा जोटा स्मॉल सिटी ताको कवर करछि. एयर ट्रैफिक इंक्रीज हेछि कोन कहले एयर ट्रैफिक इंक्रीज हेछि. कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस से मध्य डिक्रीज हेछि. कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस माने जे समस्त अफोर्ड करि परिबे अफोर्डेबल एयर फेयर फॉर एवरीवन समस्त देई परिबे सेटा इंक्रीज हेछि. उड़ान स्कीम रो तीनटा बेसिक एडवांटेज अछि कोन ना बिजनेस इंक्रीज हेइ परबो बिजनेस बढ़ी परिबे काई कि माने इजीली कम्युनिकेशन पाई माने टूरिज्म बढ़िबो गोटे जगह आ गोटे जगह ट्रांसपोर्टेशन पाई एवं एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो. These are the 3 advantages of the scheme. The next is National Food Security Act. National Food Security Act 2013 national. By which ministry? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So food security objective kono na तीनटा point होउछ objective accessibility, affordability and availability. पढि जामे आप accessibility, affordability and availability. जोटा हम देखते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिस इज अ की इनिशिएटिव अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एटा 5 वर्ष पई पुनी एक्सटेंड हे गला 2024 रु एटा 5 वर्ष पई पुनी इंक्रीज है. ऑब्जेक्टिव कोन ना फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया होचार बेसिक ऑब्जेक्ट. बेनिफिट को माने पाइबे ना सब्सिडाइज राइस पाइबे 3 टंका रे व्हीट पाइबे 2 टंका रे क्वार्ट्स ग्रेन पाइबे टंका टा पर केजी हला एको को जाय सेंट्रल इश्यू प्राइस को माने पाइबे ना प्राइमरी हाउस होल्ड पाइबे अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जो माने से माने पाइबे. प्राइमरी हाउस होल्ड को मिलियो 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ. अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जो माने से माने को मिलियो 35 केजी फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ प्लस अंत्योदय हाउस होल्ड जो माने से माने को 1 केजी सुगर मिलियो पर फैमिली पर मंथ थ्रू द TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये गला तार बेसिक ऑब्जेक्टिव. सो नेक्स्ट स्कीम को जिबा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंडर रे
the government has decided to continue free food grains कौन प्रोवाइड करे जो फ्री फूड ग्रेन्स को मान को ना 81.354 crore बेनिफिशियरीज जो माने अंत्योदय अन्न योजना अंडर अछंती प्रायोरिटी हाउसहोल्ड जो माने दे आर द बेनिफिशियरी नेक्स्ट 5 ईयर पई ये 1 जनवरी 2024 रु स्टार्ट होची स्कीम सो आ गोटे इंपोर्टेंट स्कीम कटी आसीबा जोटा हम देखथले वन नेशन वन राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एथिरे प्रॉब्लम कोन थिला एवं यार सॉल्यूशन बा को सिचुएशन थिला एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट वी हैव टेकन बेनिफिशियरी मानकू केवल दे आर कन्फाइंड टू द फेयर प्राइस टॉप दे आर कन्फाइंड टू फेयर प्राइस टॉप सो एटी रेशन कार्ड टैग टू अ पर्टिकुलर फेयर प्राइस शॉप जो माने रेशन कार्ड होल्डर से माने तांकर जहां भी एंटाइटलमेंट केवल एफपीएस 2 रे सही शॉप 2 रे ही पाई पारि अदरवाइज आउ केमती अलगा वे किछ नाही सर जो माने माइग्रेट करूतले गोटे जगह आउ गोटे प्लेस को सेमानकर एक्सेस नथला पीडीएस 2 रे फूड ग्रेन्स पाइबा पे सो माइग्रेशन मींस देयर इज अ लॉस ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली जेतु सेटी नेक्स्ट पीडीएस को समान ट्रांसफर करि परिबे नाही माने नेक्स्ट फेयर प्राइस शॉप जहा को कंट्रोल दुकान कहूचे जेतु सेठी के समान ट्रांसफर करि परिबे ऑटोमेटिकली देयर विल बी फूड लॉस फूड सिक्योरिटी लॉस देन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थिला एटा गोटे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज नुआ राशन कार्ड नवा को पड़ुतिला एवं 5-6 मास लागि जाउतला सेमानकु टू कंप्लीट दिस फॉर्मेलिटी एंड टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर नो 5-6 मंथ पर्यंत दे हैव टू सफर फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी एही कारण मानक पई रिजोल्यूशन आसिला कोथरे ना वन नेशन वन राशन कार्ड टू ऑन रिजोल्यूशन and there is no need to surrender and reapply for new ration card surrender करिवार आवश्यकता नहीं कि नुवा राशन कार्ड पई अप्लाई करिवार आवश्यकता नहीं जोटा existing card that can be used in a new place so portability करिया मध्ये दरकार नहीं registration portability माने चेंज करिया पई मध्ये किछि आवश्यकता किछि पेपर वर्क not required जोटा सेम राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड that will be used so there will be authentication on the EPOS Aadhaar biometric द्वारा और authentication है so these are the solutions for change of place and to secure your food security that is why the Department of Food and Public Distribution in association with NIC launched mobile application जार नाम होची मेरा राशन so मेरा राशन द्वारा National Food Security Act रो बेनिफिशियरी माने स्पेसिफिकली माइग्रेंट बेनिफिशियरी माने जो माने गोटे प्लेस रो आ गोटे जगह को माइग्रेट करूछन से माने वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम रो एडवांटेजेस उठै परिबे सो करेंटली ये जो मेरा राशन एप्लीकेशन हम देखुचे मोबाइल एप्लीकेशन ये 12 टा लैंग्वेज रे अवेलेबल अछि इंक्लूडिंग ओडिया लैंग्वेज 12 टा लैंग्वेज रे टा अवेलेबल अछि आको यूटिलाइज करि परिबे सो दैट ऑर्डिनरी पर्सन आको यूटिलाइज करि परिबो बा इंग्लिश हिंदी न जानथो लोक मते आको व्यवहार करि परिबो नाउ कम टू द नेक्स्ट थीम Aditi assisting development of innovative technologies with 𝐼𝐷EX so यार ऑब्जेक्टिव कोन यार ऑब्जेक्टिव होची आत्मनिर्भर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर इट आसुची इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन आत्मनिर्भर डिफेंस सो जदि हम देखिबा यार सेकेंड एडिशन को रक्षा मंत्री कोनी लॉन्च करिसंती याको so this राष्ट्र मंत्री श्री राजनाथ सिंह launched the second edition of assisting development of innovative technologies with 𝐼𝐷EX बाजा तमे आदिति 2.0 कहूचे challenges and the 12th edition of Defense India Startup Challenges during the Defense Connect 4.0 एटा कोठी ने दिल्ली रे हितला अक्टोबर 7 अक्टोबर रिसेंटली 7 अक्टोबर 2024 रे एटा दिल्ली रे हितला सो ये को रिलेटेड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करछन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम टेक्नोलॉजी मिलिटरी कम्युनिकेशन एंटी ड्रोन सिस्टम ये सब इंपोर्टेंट बा हाइलाइटेड डेवलप्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी को हम यूज करछे आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम यूटिलाइज करिया पई बा इंडिया रे एस्टैब्लिश करिया पई तो एटी मन रखिबे आर फुल फॉर्म मन रखिबे एवं को मिनिस्ट्री आनिछि मन रखिबे दैट इज इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोन कहली ऑब्जेक्टिव वाला आत्मनिर्भरता इन डिफेंस आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सो इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करूछ then the next one is your digital india program by ministry of electronics and it so digital india कहला में कोन बुझ what is the meaning of digital india ये गोटे प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज फ्यूचर
सो एटी ट्रांसफॉर्मेशन आम करूचे ट्रांसफॉर्मेशन करूचे कौन पे नॉलेज लेवल ट्रांसफॉर्मेशन करूचे सो ये गोटे अम्ब्रेला प्रोग्राम इट कवर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी then you are implemented by the all the government means by all the ministries and by all the departments तो ये प्रोग्राम कौन यार ऑब्जेक्टिव कौन ना जोड़ा एक्जिस्टिंग स्कीम अच्छी ये सब एक्जिस्टिंग स्कीम को ये कंबाइन करूची प्रथमतः ये स्कीम को ये रिस्ट्रक्चर करूची और रिफोकस करूची इट इंप्लीमेंट्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर there are many elements which are only process improvements with minimal cost कम cost जेम देर process improvement ही परिव and there is a common branding of programs common branding of programs so ये digital india program रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन ये तीनटा की एरिया ऊपर फोकस करूची कौन ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिया गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटी ये तीनटा जिंस को ये फोकस करूची सो फर्स्ट विजन आर देखियो विजन एरिया 1 दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन सो डिजिटल इंडिया रे एटी जो जो पॉइंट आपको डिस्कस करबी आपको नो डाउट स्कीम रे त हमें पढिले या व्यतीत आपको अपन यूज करि परिबे जीएस पेपर गुडा करे आंसर लिखला बेले जो ई गवर्नेंस पेपर अछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल यूज ही परिबो सोशियोलॉजी रे यूज ही परिबो पीएसआईआर ऑप्शनल मध्ये आपको यूज करि परिबो सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी एटी कोन ना हाई स्पीड इंटरनेट कोर यूटिलिटी ला हाई स्पीड इंटरनेट डिजिटल आइडेंटिटी बैंक अकाउंट एवं मोबाइल फोन पार्टिसिपेशन जोटा हमें देखले जेम पूर्व जनधन योजना अंडर जाम थिला जनधन योजना अकाउंट आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर सेम टाइप ऑफ जिंस मोबाइल फोन बैंक अकाउंट को लिंकिंग कॉमन सर्विस सेंटर पब्लिक क्लाउड रे शेयरेबल प्राइवेट स्पेस सिक्योर साइबर स्पेस विजन 2 गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड यार ऑब्जेक्टिव होची टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को माने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टा इंक्रीज कर यार ऑब्जेक्टिव प्लस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक एवं कैशलेस करवार ऑब्जेक्टिव विजन एरिया 3 डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज करवा यूनिवर्सल एक्सेस बढ़ेगा फॉर डिजिटल रिसोर्सेज all the documents certificates to be available on the cloud so this is all about digital library pa hame digital resource को यूज करके हमें different type of service बा सेव करि परिबा हमर डॉक्यूमेंट गुडा तो डिजिटल इंडिया रे ना नोटा important pillar अछि कोन ना ब्रॉडबैंड हाईवेज यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम ई गवर्नेंस ई क्रांति रे देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आईटी फॉर जॉब्स अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स ये नॉट आउट नॉट अ पिलर नॉट अ इंपोर्टेंट पिलर पिलर 1 हला ब्रॉडबैंड हाईवेज ब्रॉडबैंड फॉर ऑल रूरल एवं अर्बन एरिया रे ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी रहइबो सेकंड इज यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी फाइनेंशियल ईयर इटा यार कवरेज केते ना अनकवर्ड विलेज जो गुडा अछंती से अनकवर्ड विलेज को कवर करिया यार बेसिक ऑब्जेक्टिव पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम जोटा हम कहते नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज करा जिवो सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूज करा जिवो बाय यूजिंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करछे पिलर 5 इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस फार्मर माने को पई ई एजुकेशन ई हेल्थ केयर प्लानिंग रे फाइनेंशियल इंक्लूजन सिक्योरिटी रे हला टेक्नोलॉजी को यूज करा जाय परियो फॉर जस्टिस लाइक ई कोर्ट सिस्टम ई पुलिस ई जेल ई प्रोसिक्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर so this is electronic delivery of services different type of services to the citizen pillar 6 is this is information for all online hosting of information and documents so it government proactively engages through social media ba online messaging system ye sab ko promote kara jauchi pillar 7 electronics manufacturing target net zero imports by 2020 pillar 8 IT for job information technology को यूज करा जाए to create jobs specifically IT and ITS in the northeastern states ITS माने information technology enabled service pillar number 9 early harvest program so it यार ऑब्जेक्टिव कोन early harvest program रो mass messaging application development e-greetings portal procurement of different device जोटा कोन biometric attendance coach all central government office in Delhi they are covered biometric attendance
सो एटी कोन होची एटा को पिलर नंबर 9 बोली कहले डिजिटल इंडिया सो एथिरे ना गोटे डिजिटल इंडिया रा गोटे मॉनिटरिंग कमिटी थाए एटा क्वेश्चन कोन आसीबो जो पार्ट आर क्वेश्चन आसीबो सेति खाली कवर करछु अदरवाइज एटा बहुत लेंथी यार गोटे मॉनिटरिंग कमिटी अछि मॉनिटरिंग कमिटी रा मनफे चेयरमैन होते प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन की ना प्राइम मिनिस्टर दीज आर द अदर मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एचआरडी हेल्थ नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना दिस इज अंडर नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कहले हम कोन होछि यार अर्थ होछि ना इंडिविजुअल एंड बिजनेस दे हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उधर कहली अफोर्डेबल एवं यूजफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक्सेस रहबा को फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल पाए फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थ होछि इन फाइनेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरीवन दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन तो जोड़ा हम देखु जे प्रधानमंत्री जन धन योजना ये गोटे नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इट एंश्योर्स एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट ये गोटे दोछ हमको जोड़ा नो फ्रिल अकाउंट बाक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट को नो फ्रिल माने नो लग्जरी अकाउंट दिस इज नो लग्जरी अकाउंट सो बेनिफिट कोन है ना सेविंग बैंक अकाउंट आप यूज करि परबे किए ना जो माने अनबैंक्ड पर्सन जो माने बैंक रे किछ अकाउंट नै due to when there is no requirement to maintain any minimum balance तो किसी minimum balance interest मध्ये अतरे पाई परिबे हला रुपे डेबिट कार्ड मध्ये मन को मिलिबो एक्सीडेंट कवर मिलिबो लाख टका पर्यंत हला 2 लाख कोइडा इंप्रूव हो जातिला 2018 मसिया रे एक्सीडेंट कवर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अछि अप टू 10000 एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स दे आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में मध्ये आपन यूज करा जाई पारे नेक्स्ट स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना गोटे गवर्नमेंट बैंक सेविंग स्कीम 2015 रे आस्तिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंडर ऑब्जेक्टिव कोन ना वेलफेयर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इट एनकरेजेस पेरेंट्स टू सेव फॉर देयर डॉटर्स फ्यूचर एजुकेशन एवं फ्यूचर पई ताको सेव करा जाई परिबो यार ऑब्जेक्टिव कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन कि अकाउंट ओपन करि परिबो इट कैन बी ओपन बाय द पेरेंट्स और बाय लीगल गार्डियन ऑफ गर्ल चाइल्ड एज लिमिट केते ना 10 वर्ष भितरे ओपन करि परिबो केतेटा अकाउंट ना ओनली वन अकाउंट गोटे पिला नारे केवल गोटे अकाउंट ही ओपन करियो सो गोटे पर फैमिली मैक्सिमम दीटा पर फैमिली केतेटा मैक्सिमम दीटा करि परिबे कंट्रीब्यूशन केते मिनिमम डिपॉजिट एनुअली 250 टका मिनिमम मैक्सिमम 1.5 लाख टका डिपॉजिट टेन्योर केते ना 15 वर्ष पर्यंत फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट So there is a flexible payment system or flexible deposit system. So at any point of time you can save as a lump sum or as installment. अधिक टका बा installment मध्ये रख परिबे. Interest rate attractive interest rate. So यार interest rate टा revise हुए quarterly. As of now जब देखियो 2023 rate अथला 8% per annum. 8% per annum. This is a tax free interest. Interest ऊपर किछि हमको tax देवार नाही यहाँ पर. Basically long term इन्वेस्टमेंट बा सेविंग ऊपर इंटरेस्ट ऊपर टैक्स फ्री हो जाता है मैच्योरिटी रूल कोन ए अकाउंट केते मैच्योर हो ना आफ्टर 21 इयर्स और अनदर कंडीशन इज देयर गोटे हला द अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 21 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग और व्हेन द गर्ल गेट्स मैरिड आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 18 इयर्स व्हिच एवर इज सैलरी जोटा एडिटर फास्ट आस पार्शियल विड्रॉल मध्ये हे परिबो जेतोळे तर बयस 18 वर्ष हो जाउची अप टू 50% बैलेंस फुल क्लोजर केतेबेले आइदर एट मैच्योरिटी और आफ्टर 21 ईयर फुल क्लोजर हे परिबो टैक्स बेनिफिट कथा कहिली टैक्स रिडक्शन कंट्रीब्यूशन टू द सुकन्या समृद्धि योजना दैट इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लिमिट केते ना 1.5 लाख पर annum 1.5 लाख पर annum premature closure हे परिबो ना नहीं yes premature closure is allowed but in exceptional circumstance कोन exceptional circumstance जदि गर्ल चाइल्ड र डेथ हे जाउची जदि सीरियस मेडिकल रीजन अछि बा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अछि ऑन प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट देला पर नॉन ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एही कंडीशन में प्रीमैच्योर क्लोजर हे परिबो अकाउंट ट्रांसफर हे परिबो ना नहीं yes from one bank or post office to another easily transfer हे परिबो no cost account operation हे परिबो after the age of 18 जियो निजे तार अकाउंट को ऑपरेट करि परिबो इंडिपेंडेंटली 18 वर्ष हैला पर नॉन डिपॉजिट पे पेनल्टी अछि ना नहीं यस मिनिमम एनुअल डिपॉजिट और 250 टका डिपॉजिट न कले फॉर ईच ईयर पेनल्टी 50 रुपीस
ताले सुकन्या समृद्धि एडवांटेजेस कोन ना इंटरेस्ट रेट अधिक टैक्स बेनिफिट पाइबो एटी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट पाई अछि सेफ्टी सिक्योरिटी पाई अछि फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर गोटे जगह आगो जाको ट्रांसफर करि परिबे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी हिसाब रे ताको डिपॉजिट करि परिबे ताले प्रॉब्लम कोन ना लिमिटेड विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी ता टिके कम है लॉन्ग लॉक पीरियड 21 ईयर पर्यंत एटा लॉक हेक रहइबो इन्फ्लेशन रिस्क यदि इन्फ्लेशन बढ़ी गला ताले एटी इन्फ्लेशन बढ़ी गले तार रिटर्न ता ऑटोमेटिकली कमी जी नेक्स्ट स्कीम बुझिबा स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्कीम अंडर तो बहुत जिनस अच्छी बट आम केवल इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक डिस्कस करुचे जो पोर्शन रु गोटे स्कीम रो जो पोर्शन रु क्वेश्चन आसीबो सेति पॉइंट डिस्कस करू समस्त को डाउनलोड करि परिबे टेलीग्राम चैनल इट विल बी अवेलेबल समस्त को डाउनलोड करि परिबे हो स्टैंड अप इंडिया स्कीम आसला केबे ना अप्रैल 2016 ने बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यार ऑब्जेक्टिव कोन ना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ौची कहा भीतर एससी एसटी एवं वुमेन मानक भीतर वुमेन एससी एसटी मानक भीतर हैला तो बैंक लोन प्रोवाइड करियो 10 लाख रु कोटी टंका पर्यंत बैंक लोन प्रोवाइड करा छै सो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ौची इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करूची एवं जॉब क्रिएशन करूची कोन कहली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जॉब क्रिएशन एवं इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सो लोन फीचर कोन अंडर अछि ना लोन अमाउंट केते मिलियो ना लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ 10 लाख टू 1 करोड़ पर्यंत so it covers 75% of the total project cost 75% of loan केते दबो ना total project cost रो 75% आसीबो स्टैंड अप इंडिया स्कीम अंडर सो अपन वर्किंग कैपिटल लियंतु वा फिक्स्ड कैपिटल माने जोटा प्लांट मशीनरी करछोनी फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल माने डे टू डे लेट्स से गोटे ब्रेड फैक्ट्री कले जो प्लांट मशीन बसला से गोटा कला फिक्स्ड कैपिटल डे टू डे टंका मन कर मैदा चीनी किनिया पई जो टंका दरकार सेटा गला वर्किंग कैपिटल इकोनॉमिक्स रे पढी जाय सब subsidy is also available eligible sector किए ना मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर ये सब गुडा एलिजिबल कौन कहली मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर सब गुडा कटी अवेलेबल लोन टेन्योर loan can be repaid over a maximum 7 year interest rate lowest applicable interest rate Tell Stand Up India under a loan who can apply, who are eligible? While women entrepreneurs of any caste, then scheduled caste and scheduled tribe individuals. Who type of enterprise under a loan? Greenfield माने जो गुडा हमरा प्रोजेक्ट को एक्सपैंड जदी करूची एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एवं ट्रेडिंग सेक्टर ओनरशिप नॉन इंडिविजुअल ओनरशिप जदी अछि नॉन इंडिविजुअल माने निजे एका कले इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल माने पार्टनरशिप रे जदी करचंती बा ताको जदी गोटे कंपनी ही करचंती हला सेठी कंट्रोलिंग स्टेक ता मिनिमम 51% थिवा दरकार जी लोन नौची ता पाखे 51% थिवा दरकार तदे नॉन इंडिविजुअल तो 100% नहीं मो पाखे अछि जदी नॉन इंडिविजुअल ताले मो पाखे 51% मिनिमम थिवा दरकार आर ऑब्जेक्टिव कोन ना ये सोशल इंक्लूजन बढ़ौची बेसिकली वुमेन एससी एसटी मान कर इंक्लूजन बढ़ौची क्रेडिट फैसिलिटी को इंक्रीज करची but it is a credit without collateral बिना mortgage रे लोन मिलुची ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज को फोकस करची न्यू बिजनेस को फोकस करची the next scheme is प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना launched by government of India in 2020 objective ना रु जणा पड़ची फिश प्रोडक्शन बढ़ेबो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करियो फिश प्रोडक्शन आउ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करियो विजन आत्मनिर्भर भारत मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करिवो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करिवो ना रु जणा पड़ुची सो एनुअल फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करिया पई चाहूची बाय 70 लाख मेट्रिक टन बाय 2024-25 सो इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट समस्त जानथिबे अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन में फिश प्रोडक्शन का बढ़ो जेमति ग्रीन रिवोल्यूशन ता होची हमर एग्रीकल्चर पई ब्लू रिवोल्यूशन ता माछ चाष व्हाइट रिवोल्यूशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन सेमती अलग रिवोल्यूशन गुडा को देखिबे रेड रिवोल्यूशन पिंक रिवोल्यूशन ब्लैक रिवोल्यूशन देन फार्मर इनकम बढ़ेबो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिवो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करिवो लाइक कोल्ड चेन नेटवर्क फिश प्रोसेसिंग यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट फिश को प्रोसेस करिवा कोल्ड चेन में स्टोर करिवा यदि एक्सपोर्ट करते फॉरेन कंट्री को पठेगा टारगेटेड बेनिफिशियरी को माने ना फिशरी रे जो माने माछ चाष करूचंती फिशरमैन एवं फिश फार्मर माने फिश वर्कर प्रोसेसर मार्केटर
एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीओ, ये समस्त होते हैं बेनिफिशियरी। सो ये को टाइप ऑफ फिशरी को इंपोर्टेंस होची ना बोथ मराइन फिश एंड इनलैंड फिश काको ना बोथ मराइन फिश एज वेल एज इनलैंड फिश दीटा को ये इंपोर्टेंस होची यार दीटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट अछि गोटेला सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट। सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट ये फोकस करूची कहा ऊपर ना नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिशरी मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, इनोवेशन एवं innovation and research in fishery field, then your surveillance system, aquaculture innovation, research, development, production of productivity बढ़ेगा होची यार बेसिक ऑब्जेक्टिव प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिया। प्रोडक्शन बढ़ेगा माने टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करूची। कोन कहली टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करूची। आ गोटेला क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जेमति कि मु कहले आइस प्लांट, प्रोसेसिंग यूनिट, फिश ड्राइंग यूनिट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कमैया पई यार यूजर बेसिक ऑब्जेक्टिव। देन फिशरमैन वेलफेयर एवं एम्पावरमेंट करबा, मॉडर्न फिशिंग इक्विपमेंट गुडा को डिस्ट्रीब्यूट करिया समस्त भीतर यार बेसिक ऑब्जेक्टिव। देन ब्लू रिवोल्यूशन बढ़ेवा एवं फोकस ऑन एक्सपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कली। इंडिया रो फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करी एकम एक्सपोर्ट करिया पई चाहौ इन द इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इंडियन फिश इट हैज अ वेरी गुड डिमांड, सेति पई ये एक्सपोर्ट इंक्रीज करिया पई चाहौ। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत, so this is the health infrastructure mission, one of the largest pan India initiative, objective health infrastructure को बढ़ेगा। एटा अक्टोबर 2021 रे लॉन्च हेतिला। सो ये हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ेबो, डिजीज सर्वेलेंस, डायग्नोस्टिक सर्विस को बढ़ेबो स्पेसिफिकली रूरल एवं रिमोट एरिया। सो इट कॉम्प्लीमेंट्स द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कौन आयुष्मान भारत रो ना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मॉडर्न और रोबस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करिया रूरल एरिया। पैंडेमिक पे वेल प्रिपेयर्ड रहियो, जेमति कोविड टाइम रे वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, हमको प्रिपरेशन बढ़िया पे पड़ी। देन डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को बढ़ेगा, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को एनहांस करबा, कैपेसिटी बिल्डिंग करबा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करबा डॉक्टर मानन को, डिजिटल हेल्थ इंक्रीज करबा, प्रमोटिंग डिजिटल हेल्थ डिलीवरी, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम थ्रू फंडिंग ऑफ बजेट। एटा गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नेक्स्ट 5 वर्ष 2021 रु 26 पई 64,180 कोटी टका सैंक्शन है। 60-40 फंडिंग, 60-40 सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एवं जम्मू काश्मीर पे एटा होती 90%, 90-10, 90-10। यूनियन टेरिटरी पे 100%, यूनियन टेरिटरी पे एटा 100%। ओके, सो या अंडर कौन कौन आसुची ना डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी को ये इंक्रीज करियो, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, आईसीयू बेड रहियो, आईसीयू बेड रहियो, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी मध्ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करा दियो, सीएचसी रो नंबर बढ़ेबो, पीएचसी रो नंबर बढ़ेबो, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेबो। दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी को इंक्रीज करियो, डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज कंट्रोल, सो एकु डेवलप करियो कोन पई माने स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करिया पई, बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी प्रोवाइड करियो, बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी प्रोवाइड करियो, बिकॉज बायो सिक्योरिटी थ्रेट्स जेम हमको देखियो कोन जोतन कोविड-19, जाइका वायरस, जिका वायरस जा कोचे, इबोला, ये सब गुडा को बायो सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब को कंट्रोल करिया पई कहूची। देन डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम को इंक्रीज करियो, डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड करियो, ई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करियो। तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स of this particular scheme. ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऊपर डिस्कशन। सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जीवा ऑन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन समस्त सुनिथिबे ये स्कीम रो ना। सो प्रथम हमें बुझिबा एटी क्वेश्चन कोन आसीबो कि स्मार्ट सिटी मिशन और व्हाट आर एसेंशियल कंपोनेंट्स, को इंफ्रास्ट्रक्चर रहिले हमें ताको स्मार्ट सिटी रे काउंट करियो। स्मार्ट सिटी रे कोडा रहिबा दरकार। फर्स्ट इज एडेक्वेट वाटर सप्लाई रहिबा दरकार, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटर हवा दरकार, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेसिफिकली फॉर द पुअर पीपल, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी बा डिजिटलाइजेशन हम जहा को कहूचे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो मैक्सिमम बेनिफिट जेमति हबो ना।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैक्सिमम बेनिफिट हम यूज करा जिवो गुड गवर्नेंस बाय यूजिंग ई गवर्नेंस हम प्रोवाइड करि परिबा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मींस द एनवायरनमेंट व्हिच इज सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे यूज करि परिबा हेल्थ एंड एजुकेशन सो दीज आर द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जोटा हमको स्मार्ट सिटी रे हमें जहां पर फोकस करू here we are also focusing on the smart solution कहा पर ना ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विस जेमि पब्लिक इंफॉर्मेशन मुके सिटीजन एंगेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग ये सब को हमें स्मार्ट सॉल्यूशन बा ई गवर्नेंस अंडर रे रखुचे इन द सेम वे वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट टू एनर्जी बा वेस्ट टू कंपोस्ट वेस्ट टू फ्यूल प्रोडक्शन वेस्ट वाटर ट्रीटिंग कला पर तको अगेन रीयूजेबल वाटर प्रोडक्शन करबा वाटर मैनेजमेंट करबा स्मार्ट मीटर यूज करबा लीकेज आइडेंटिफाई करबा एनर्जी मैनेजमेंट स्मार्ट मीटर मैनेजमेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करबा नॉन रिन्यूएबल को यूज न करी अर्बन मोबिलिटी स्मार्ट पार्किंग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम टेलीमेडिसिन टेली एजुकेशन दीज आर स्मार्ट सॉल्यूशंस ये गला इंपोर्टेंट पॉइंट स्मार्ट सिटी रो को पॉइंट रो क्वेश्चन आसीबो सेति डिस्कस करू देन दीनदयाल अंत्योदय योजना अजा को हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बोले कहूचे यार ऑब्जेक्टिव कोन ना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड सीडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दे साइन एमओयू कोन पाइन फॉर प्रमोशन ऑफ वुमेन लेड एंटरप्राइज सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर मानक भितर वुमेन लेड एंटरप्राइज को प्रमोट करिया पई इटा आसी सो ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करूची कहा द्वारा नाम दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑब्जेक्टिव कौन कहले ना एसएचजी गुडा को एम्पावर करिया पई चाहूची पॉवर्टी स्पेसिफिकली वल्नरेबिलिटी इन द अर्बन पोर जो माने वल्नरेबल अर्बन पोर समान का नंबर रिड्यूस करिया पई चाहूची सो ये शेल्टर प्रोवाइड करची इट प्रोवाइड शेल्टर्स इक्विप्ड विथ एसेंशियल सर्विसेज टू द अर्बन होमलेस जो माने अर्बन होमलेस समान को ये कौन करची ना शेल्टर प्रोवाइड करची एसेंशियल शेल्टर प्रोवाइड करची हैना प्लस समान का सोशल मोबिलाइजेशन करची एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम each urban poor household preferably a woman should be brought under the SHG network SHG membership ये कहूची SHG membership रा at least 70% of the members should be urban poor SHG okay now urban poor SHG which may consist of 10 to 20 members एटी केतना member question आसीबनी that is 70% हम पे important एवं एमान को कोन प्रोवाइड करा जिवो ना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा नेक्स्ट पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि बापू स्वनिधि स्कीम बोली कहा जाए प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम कहा जाउची को तो यार ऑब्जेक्ट कोन ना 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो माने अछंती सेमान को कोलैटरल फ्री वर्किंग लोन प्रोवाइड करियो सो सेमान कर बिजनेस को रिस्टार्ट करिया पई ये सेमान को वर्किंग लोन प्रोवाइड करियो बुझिला सो बेनिफिट कोन है ना द स्कीम प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 फॉर 1 year tenure सो स्ट्रीट वेंडर सेमान को सब्सिडी रे 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट रे एटी लोन मिलियो से लोन कोन भाई ना वर्किंग कैपिटल लोन पई ताको मिलियो कैपिटल तमु दी प्रकार कहितले पूर्व गोटेला वर्किंग कैपिटल गोटेला हमरा फिजिकल कैपिटल बा फाइनेंशियल कैपिटल जोटा को यूटिलाइज करा जाउची फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक प्लांट मशीनरी जा यूज करछ वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस को रन करिया पई then अटल भूजल योजना बाय को अटल जल बोली कहा जाए दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सो दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 एम कोन इट विल इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स को थ्रू आउट द कंट्री ये मैनेज करियो ये कहा ना अनुसार रही छी ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अनुसार एटा है तो यार की फीचर कोन ना सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हबट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रो ऑब्जेक्टिव कोन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पब्लिक दिस इज ऑल अबाउट द पीपल तो ये कुछ ग्रासरूट लेवल ले पब्लिक जेमति एटी पार्टिसिपेट करियो देन इन एटी आउ कोन हबो ना बिहेवियरल चेंजेस टू प्रमोट जुडिशियस वाटर यूज जो अननेसेसरी वाटर यूज होची ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करियो अननेसेसरी वाटर को नष्ट न करिया पई then implementation in identified water stressed area जोड़ा को water stressed region अछि India is basically moving towards a water stressed to water scarce country पूर्व स्ट्रेसफुल रीजन थिला एबे स्कार्स रीजन हमको बहुत अधिक देखिया को मिलची स्पेसिफिकली अनेक गुडा अर्बन एरिया लाइक बेंगलुरु चेन्नई दिल्ली एटी हमको वाटर स्कार्सिटी देखिया पई मिलची
सो ये कहूँ आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस एरिया रे ये इंप्लीमेंट करिवो ठीक भाव में प्लस सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट रो यदि सेम टाइप रो किसी प्रोग्राम अछि ता सहित मर्ज करियो बा कोलैबोरेट करियो ताले बेनिफिट कोन ना ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी बढ़िबो सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर इंटरवेंशन अंडर जल जीवन मिशन अंडर सोर्स सस्टेनेबिलिटी बढ़िबो कंट्रीब्यूशन टू द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम को डबल करा जाय परिबो प्लस बिहेवियरल चेंज आम आनी परिबा जुडिशियस वाटर यूज करिया पई वाटर को नष्ट न करिया पई ताले ऑब्जेक्टिव एटी कोन ऑलरेडी कहली सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज करि परिबा एटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम पर्कोलेशन टैंक ये सब करि परिबा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करि परिबा कैपेसिटी बिल्डिंग करि परिबा कैपेसिटी बिल्डिंग को मन करना ग्राम पंचायत रो करि परिबा लोकल कम्युनिटी लोकल इंस्टीट्यूशन लोकल स्टेक होल्डर एमान कर करि परिबा डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग करि परिबा मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन कहार ना ग्राउंड वाटर थ्रू यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करी ये सब करि परिबा देन द नेक्स्ट वन इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज रो गोटे पार्ट यार ऑब्जेक्टिव कोन ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोस्ट कोविड रिकवरी फेज कोविड रो इंपैक्ट कोविड-19 इट कंप्लीटली डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी तापर इकोनॉमी रो रिकंस्ट्रक्शन पई ये कहूची रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी सो दिस स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा एटा इंप्लीमेंट होची सो ये फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करिवो कहां पर ना एम्प्लॉय मानक ऊपर फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करिवो सो डिसेंबर 2020 रे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये आसिला ऑब्जेक्टिव कोन ना एम्प्लॉय मानकू ये इंसेंटिव प्रोवाइड करियो टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड टू रिस्टोर लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ये जोटा जति इकोनॉमिक लॉस अछि इसे सब को रिकंस्ट्रक्ट करिवो रिनोवेट करिवो देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव सो एठी कोन होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रेडिटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years both the employees share 12% of wage and employers share 12% of the wage for contribution payable or only the employee share depending on the employment strength of the EPFO registered establishment. It is 12% important आम पाई 12 और 12% important. तार ऑब्जेक्टिव कौन ना प्रथम ऑब्जेक्टिव होती जॉब क्रिएशन ये जॉब क्रिएट करिवो adequate number of job पैंडेमिक अफेक्टेड वर्कर मान को ये सपोर्ट करिवो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करिवो मींस रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करिवो विथ द ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम देन इकोनॉमिक रिकवरी करिवो आफ्टर द पैंडेमिक सो ये पढ़ के आप डिस्कशन कले सेंट्रल गवर्नमेंट पे करिवो 24% ऑफ द वेज 12% एम्प्लॉयर शेयर 12% एम्प्लॉई शेयर देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन बा पीएमएसवाईएम आपको कहा जाउची श्रम योगी मनधन योजना ये गोटे वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 रे एटा लॉन्च हेतला ऑब्जेक्टिव कोन ना सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो को मान को ना जो माने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो तो यार ऑब्जेक्टिव कोन ना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मान को ये पेंशन प्रोवाइड करियो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो ओल्ड एज रे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एथरे कोन ना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन लइबो पेंशन फंड रे गवर्नमेंट रो मध्य एथरे कंट्रीब्यूशन लइबो तलार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन ना एज हेतिवा दरकार 18 रु 40 वर्ष इनकम लिमिट शुड नॉट एक्सीड 15000 पर मंथ एम्प्लॉयमेंट टाइप बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हेतिवा दरकार एमाने एग्रीकल्चरल लेबर रही परंदी बीडी वर्कर रही परंदी हैंडलूम वीवर रही परंदी कंस्ट्रक्शन वर्कर डोमेस्टिक वर्कर रही परंदी कि एथरे इंक्लूड हेबेनी ना जो माने ऑलरेडी who are not covered by other pension schemes specifically the workers should not be a member of EPF employees provident fund NPS national pension scheme by employees state insurance corporation income tax non payer so ye the individual should not be an income tax payer these are the conditions ए eligibility criteria thile se mane ye scheme ra benefit uthei paribe tale thre pension benefit kono na guaranteed monthly pension upon reaching the age of 60 60 वर्ष पर से मानको पेंशन मिलियो मंथली पेंशन केतना 3000 टका जदि से मानकर डेथ हे जाउची ताले पेंशन टू द स्पाउस मिलियो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यार ऑब्जेक्टिव कोन
ये जोटा रीजनल इम्बालांस देखिबा हमको मिलुची बा जोटा माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरिया सेठी जदि हमको कोनोस प्रकार रीजनल इम्बालांस देखिबा पई मिलुची सेठी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट क्रिएट करबा होचार बेसिक ऑब्जेक्टिव को टाइप रो प्रोजेक्ट ना एजुकेशन हेल्थ स्किल डेवलपमेंट वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हैला सो स्कूल एडिशनल क्लासरूम हॉस्टल कंप्यूटर लैब ड्रिंकिंग वाटर आईटीआई पॉलिटेक्निक सो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करबा होचार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोडी आर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कोन इंक्लूसिव डेवलपमेंट रो अर्थ होची इंक्लूजन ऑफ एवरीवन the developmental model which is being formulated by the government that should include each and everyone in the society तो ये बेसिकली माइनॉरिटी मानन को माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट पारसी जैन एमान को इंक्लूड करिया पई चाहूची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गैप को ब्रिज करिया पई चाहूची एजुकेशन हेल्थ लाइवलीहुड रे ब्रिज करिया पई चाहूची रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करिया पई चाहूची बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट by identifying areas lagging behind in terms of human development indicator जो रीजन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर माने हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशन एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे कमी अछि ये ताकू गैप को ब्रिज करिया पई चाहूछु रिड्यूस करिया पई चाहूछु स्किल एवं लाइवलीहुड इंक्रीज करिया पई चाहूछु लाइवलीहुड डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट सोशल जस्टिस जेंडर पैरिटी चाहूछु सोशल जस्टिस इंक्रीज करिया पई चाहूछु बेटर एजुकेशन हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़िया पई चाहूछु हैला देन द नेक्स्ट स्कीम पीएम विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये गोटे इनिशिएटिव आसितला 2023 रे ऑब्जेक्टिव कोन टू एम्पावर ट्रेडिशनल आर्टिसन एवं क्राफ्ट्समैन विश्वकर्मा ये नार भी हमें जानि पड़ुचे ये स्किल प्रोवाइड करिवो स्किल एनहांस करिवो फाइनेंशियल असिस्टेंस देवो प्लस आर्टिसन इकोनॉमी को ये डेवलप करिवो हला बिकॉज़ गवर्नमेंट थ्रू दिस स्कीम हैज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड the relevance of this particular artisan मानकर relevance कोन टू द इकोनॉमिक गवर्नमेंट आथरे रिकॉग्नाइज करि सारिछ so एटी डिजिटल ट्रांजैक्शन पई से मानको इंसेंटिव प्रोवाइड करियो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करियो फॉर देयर ब्रांड प्रमोशन समान निज ब्रांड को निजे प्रमोट करि परिबे प्लस सपोर्ट करियो फॉर मॉडर्न टूल्स कैपेसिटी बिल्डिंग करियो प्रोडक्टिविटी बढ़ाइबो स्किल अपग्रेडेशन करियो हला रिकॉग्नाइज करियो आर्टिसन मानको बसमानकर काम को रिकॉग्नाइज करियो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम सो कोन यार ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची इट विल सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस ये कोन करियो ट्रेडिशनल आर्टिसन मान को सपोर्ट करियो जो माने ट्रेडिशनल स्किल्स लाइक कारपेंटरी ब्लैक स्मिथिंग पोटरी वीविंग एगुडा कहउछथि स्किल डेवलपमेंट एवं मॉडर्नाइजेशन करिवो से मानकर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी डेवलप करिवो दिस इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्ट्रेंथन होची इट विल प्रमोट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आर्टिसन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट गुडा को ये प्रमोट करिवो प्लस से मानको एनकरेज करिवो सेल्फ रिलायंट होवा पई बा आत्मनिर्भर होवा पई बा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करिया पई को माने ये स्कीम अंडर रे इंक्लूड ना 18 टा ट्रेडिशनल ट्रेड प्रैक्टिशनर्स इंक्लूडेड लाइक कारपेंटर ब्लैक स्मिथ वीवर पोटर गोल्डस्मिथ बार्बर टेलर एमान सब एथरे इंक्लूडेड सो पीएम विश्वकर्मा दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस इन द इंडियन इकोनॉमी को समानकर कंट्रीब्यूशन कोन खाली इकोनॉमी को नुहे से माने इंडिया रा कल्चर को मध्ये प्रमोट करछन से माने कल्चर को मध्ये कंटिन्यू करछन कंटिन्यूटी रखछन हैला सो दे आर आल्सो प्रिजर्विंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री बेसिकली ये फोकस करछि वुमेन आर्टिसन मान को ऊपर डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज करिया पई एवं ग्लोबल मार्केट को एक्सेस बढ़ेबा तो ये वाला किछि इंपोर्टेंट स्कीम्स ये स्कीम आइदर दिस स्कीम्स जो स्कीम ऊपर हम डिस्कशन करली दे आर इन न्यूज काहे ना मे बी नवा स्कीम हेतिबा कारण बा रिन्यू हेतिबा कारण बा अलगा कोनछ वेरे जेमते हम देखले गोट जागे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तांको रिपोर्ट दिछन से रिलेटेड सो इट डिफरेंट ग्राउंड रे जदी कोनसी स्कीम इज इन न्यूज तले हम ताको डिस्कशन करले इन डिटेल डिस्कशन ये ताको समस्त डाउनलोड करि परिबे टेलीग्राम चैनल लु इन नोट्स को डाउनलोड करिवे एंड यूज दिस नोट्स इन नोट्स को पीडीएफ नोट्स को प्रिंट करंतु बा देखि कि खाता रे लिखंतु खातार लिखि कि जस्ट हैव योर ओन नोट्स से नोट्स को बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस प्रैक्टिस करके जिवे रेस्ट ऑफ द स्कीम आउ जहां नुवा स्कीम आछबे तक हम आउ गोटे क्लास रे कवर करी सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आजिर ई सेशन ने हम अनेक गुडे इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर डिस्कशन कल बेसिकली सीएसएस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मान को ऊपर आज डिस्कस कल नेक्स्ट क्लास रे आउ आगो डिस्कशन करिवा दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट थैंक यू वेरी मच